हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो गाइस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स, सेक्टर गैस एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्री गैस डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द टेक्निकल चार्ट। गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, live market price 294.30 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹350। 350 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। इनसाइट्स, की मेट्रिक्स, रिटर्न्स, इंट्राडे फैक्ट चेक। इन द लास्ट 17 years only 3.06%। ट्रेडिंग सीजन saw intraday gains higher than 5%। ओके, PE ratio 9.83, EPS TTM 29.09, market capital 16,601.92 crore, sector market capital rank 11, PB ratio 1.32, dividend yield 1.75, face value 10, beta 0.68. GSPL share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year and 3 years and 5 years. Okay, peer comparison. This is the technical chart. Peer comparison, GSPL, GAEL and Adani Gas and IGL, Indraprasth Gas. Okay, stock returns versus Nifty Midcap 100. Stock gave a 3-year return of 43.58% as compared to Nifty Midcap 100, which gave a return of 139.66% as of last trading season. Financials, ratios performs. GSPL, GAEL, Adani Gas, IGL, Gujarat Gas. Okay, financials. Okay, employee and interest expenses. Company has spent less than the 1% of its operating revenue towards interest expenses and 1.48% towards the employee cost in the year ending 31st March 2023. Okay, quarterly annual March 2023 ratios. Return on equity 17.37, final year 2023. Okay, cash flow, net cash flow from operating activities, final year 2023, final year 2022, 2,745.54. Balance sheets. Okay, total assets 17,315.91, final year 2023. Okay, income from profit and loss. Total income 4,315.09, total income growth plus 6.82, total expenses 3,564.68, total expenses growth plus 8.15, EBITDA 750.41, EBITDA growth plus 0.88, profit after tax PAT 372.99, PAT growth plus 3.80, EBITDA margin 17.39, net profit margin 8.64, basic EPS 6.61. Okay, shareholding pattern. Total shareholdings, quarter on quarter change. Category 31st March 2023. Promoters 37.63, pledge 0.00, FII 16.72, DII 24.87, mutual funds 21.75, others 20.78. Okay, mutual fund ownership. First, Mere Asset Emerging Blue Chip, Direct Growth, Equity Large and Mid Cap, rating 4-star, amount invested 521 crore and 1.95. Then second, Mere Asset Tax Saver, Direct Growth, Equity Else, rating 5-star, amount invested 266.39 crore.
Then third, Mire Asset Focus Fund Direct Growth Equity Flexi Cap rating 4 star, amount invested 211.87 crore. Okay. Technicals. Okay. 45% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. 54 negative movement, 54%. Okay, so guys, Gujarat State Petronet current market price 294.45 with a target price of रुपये 350. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार, बोलो राधे राधे. ओके, नेक्स्ट स्टॉक. ओके सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स. लाइव मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 2823.10 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपये 3500. 3500 का टारगेट है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. दिस इज़ द टेक्निकल चार्ट. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके सो गाइज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स. सेक्टर केमिकल्स, इंडस्ट्री केमिकल्स एंड स्पेशलिस्ट. लाइव मार्केट प्राइस 2823 with a target price of रुपये 3500. This is the technical chart, Gujarat Fluorochemicals. Insights, key metrics, returns. Insights, intraday fact check. In the last 3 years, only 3.75%. Trading season saw intraday declines higher than 5%. Okay. Key metrics: PE ratio 24.47, EPS TTM 120.97, market capital 30,966.72 crore. Sectoral market capital rank 2, 3. PB ratio 5.62, dividend yield 0.00, face value 1. Gujarat Fluorochemicals shares returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay, peer comparison. Ratios for firms: Gujarat Fluorochemical 23.28 PE. This is the technical chart, Gujarat Fluorochemicals peer comparison. Gujarat Fluorochemical Cleans Science and Tech and Galaxy Surfactants. Okay, and Jubilant Ingravia. Stock returns versus Nifty Midcap 100. Stock gave a 3-year return of 559.11% as compared to Nifty Midcap 100, which gave a return of 139.66% as of last trading season. Okay, financials. Okay, quarterly annual March 2023 betting 3-year revenue CAGR. Company's annual revenue growth of 40.37% outperforms its 3-year CAGR of 26.65%. Ratios: return on equity percentage 24.06, final year 2023. And cash flow: net cash flow from operating activities 0.00, final year 23. Balance sheets: total asset annual 8,371.39, final year 2023. And income, profit and loss. Okay, total income 1,490.02, total income growth plus 3.52, total expenses 1,005.94, total expenses growth plus 5.36, EBITDA 484.08, EBITDA growth minus 0.09, profit after tax PAT 331.88, PAT growth plus 0.74, EBITDA margin 32.49, net profit margin 22.27, basic EPS 30.21. Okay, shareholding pattern. Total shareholdings, quarter on quarter change.
ओके, कैटेगरी 30 जून 2023, promoters 63.81, pledge 4.93, FII 6.44, DII 5.84, mutual funds 5.56, others 23.90. Okay, mutual fund ownership, technicals, okay, pivot level classic R1, R2, R3, S1, S2, S3. Okay, average true range 5 days, 14 days and 28 days. Okay, so guys, Gujarat Fluorochemicals 2828.30 live market price with a target price of रुपये 3500. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.